होता है और उसकी जो ये अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. ऑलराइट. ओके मैम. तो जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट होती है जिससे अट्रैक्ट करता है वो आयरन, कोबाल्ट, निकल इज नोन एज मैग्नेटिज्म एंड अर्थ इटसेल्फ shows a magnetism characteristic. How it shows? Because earth is made up of 3 layers. The outermost layer of the earth is crust. The middle portion of the earth is mantle and the innermost. Yes. Ma'am, can you मैम आप क्या मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैम? ये लिखा हुआ क्योंकि मैं लर्न कर दूंगा अच्छे से. ओके ठीक है. आई विल राइट एंड आई विल टेल यू. ओके. ओके मैम. Or I can share a screen with you where I will make and I will show you. So if I draw a structure of earth like this. Okay. So it has 3 layers. So when it has 3 layers in it, so one another layer is inside this. Okay. And another layer inside this. Okay. So if this is earth, the outermost layer, that means this is crust. You can make in your copy. Okay. Then the middle portion, which is this, is mantle. And the inner portion, which is this, is core. Okay. Inside this core, you have molten materials. Okay. These molten materials means those materials which are in liquid state. These are iron, cobalt, nickel, etc. These are the chemical names which I am writing. Fe means iron. Okay. Okay, ma'am. Cobalt means CO and nickel means Ni. Okay. These materials are present inside this core. So because of these materials which are in molten state and which are of a magnetic property, the whole earth shows or it gives you a magnetic effect. Okay. Can you hear me? Yes, I can hear you, Aryan. Can you hear me? Can you hear me? But I can't hear you. You can. Yes. Ma'am, but I can't able to see your screen. You cannot see my screen, then you can leave the meeting and join it again. Okay, ma'am, I'm trying. So due to this material, molten material inside the core of the earth and the materials which are basically iron, cobalt, nickel, in the molten state, the earth shows a magnetic effect or magnetic property, and that is why there is a pole system. Because as I told you in my previous class that magnets shows directional thing. They have direction, so they show directional property. Okay. So if this is showing a magnetic effect, it will have a direction north and south, and if two directions are already found, you will get east and west also.
Okay. Yes, ma'am. Why? As you know, there are 4 directions: north, south, east, and west. So West. on the, yes, correct. On this side, you will find east, Yes, and on ma'am. this side, you will find west automatically. Why it has formed? It is just formed because of this molten material which are inside the core. Okay, and therefore Okay, ma'am. Earth gives us Earth has a direction, and therefore all the latitudes and longitudes can be formed on the Earth. And Okay, ma'am. therefore you learn in your geography that there are 4 directions, and you have imaginary lines like latitudes which are going from east to west, and imaginary lines which are moving from north to south as longitudes. Okay. Okay, ma'am. So now you must have got the idea about geography also, and about the magnetic property of the earth also. Am I correct? Yes, मैम 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 एक चीज पूछनी थी मैम आप कि पूछिए। वो कंपास जो होता है मैम वो किस जगह घूमता है बस किस जगह कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा नॉर्थ साउथ बस पता चल जाता है तो वेस्ट ईस्ट सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, एक बार नॉर्थ साउथ का चल गया तो देन आपको पता चल ही जाएगा ना कि उसके राइट हैंड साइड वाला ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्ट। यस मैम। बस तो यही है, जैसे कि आप सूर्य को जल चढ़ाते होंगे बिकॉज यू आर ब्राह्मण। यस मैम। मैम मैं कह रहा हूँ कि वो कंपास कैसे पता लगाता है कि किस साइड है मैम। जब मैग्नेट को आप ऐसे भी लटका दोगे ना, when you hold that magnet in your hand, any magnet, when you will hold on your hand and it will, you will tie a thread to it. अपने थ्रेड हाथ में अपने मैग्नेट लिया, उसमें थ्रेड बांधा, and you tie it and you hang it. जब उसको आप हैंग करोगे ना freely, then it will be facing towards north and south. ऑटोमेटिकली किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा सिवाय नॉर्थ एंड साउथ के। और जो साउथ वाला पार्ट है मैग्नेट का, इट गोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वाला साउथ। गॉट दैट? समझ में आया आपको? यस मैम समझ आ गया मैम। माइक वॉज म्यूटेड मैम। आर्यन बोल रहा है अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ। आर्यन आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो तो व्हाट कैन आई डू? I can do one thing. I can click the photograph and send it to you over WhatsApp. You can hear. यहाँ पे सुन लो और वहां पे पढ़ लो। मीट आई कैन नॉट गो ऑन मीट नाउ। अब पहले इस पे जाओ फिर मीट पे जाओ। इट रियली इट इज वेरी ट्रबल। अरे प्रज्वल मीट पे कर लें। मैम कर लो मेरे भी कोई दिक्कत नहीं मैम।